film industry में, because a lot of people have a lot of egos in the film business, you know it, I know it, everyone knows. So मुझे नहीं पता, ये ना लोगों को पसंद नहीं होता, लोगों को ये दिखाना होता है कि मुझे सबके बारे में सब कुछ, सबका काम पता है. Some directors are really secure and lovely enough to actually come and say it. Like I work with a friend, I work with a friend of mine, and he has made many films. I've worked with him. He is so nice and so clear about the fact that मैं कॉस्ट्यूम में नहीं घुसना चाहता. मुझे मेरा फिल्म पता है, मुझे मेरे कैरेक्टर्स पता है, मुझे मेरा वर्ल्ड पता है, बट मुझे कॉस्ट्यूम्स नहीं पता. तो दैट्स व्हाई आई ब्रिंग यू ऑन. यू टेक दिस ब्रीफ एंड देन यू क्रिएट द कैरेक्टर्स फॉर मी. यू नो that's the best way to function it. If you have let's say a very specific point of view that you believe in, you should tell me that, and then we will cater to that. But if you don't know what you want, then it becomes a problem for everyone. I absolutely agree. I mean, you're a director yourself, so you will know what I mean exactly. It's like the clarity has to be there. Yeah. One. Number two, I also feel that two more values should be there always. One, honesty. Yes. To accept that even if you don't know about a certain look, you can discuss. Yeah. It's your area, and you are an expert. So I can ask you, this is my character, and how can it be bettered? Yeah. And then the courage to accept that you don't know. Yeah, and there is, it's a very simple thing. I don't know about anything more or less except for costume or film set. Yeah. So मुझे कुछ नहीं है यार. अगर somebody कोई आके मुझे, I always like talking to the DOP a lot, because मुझे lighting का ना, because I feel that the DOP really creates the look of a film. So मुझे लगता है कि अगर मैं, and also I'm not really rigid. So क्या होता है कि being rigid on a film set is very weird. Like मुझे लगता है कि it's very important, exactly what you said, to be open to ideas. You know, like I will show an outfit to the DOP and I say, what do you think? And if he doesn't like it, I want to ask I want to understand his point of view. I'm like, okay, because मुझे लगता है ये इसमें अच्छा लगेगा. Then I've done it with all my DOP friends, like Shudipda and Bose and a lot of people, even Amal right now and Santa and all. I always ask them कि why are you saying no to this? So that what happens is next time when I create something, I keep it in mind. But यार वो तभी हो सकता है when you sort of feel that कि मुझे ये जानना है और मुझे पता नहीं है. अगर मैं हर एक चीज में जाके यही पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ कि मुझे सब पता है, तो फिर you will never be able to learn, you know. What do you need others also? Yeah, and exactly, and this is not my field of expertise. So अगर if I can learn your point of view and excel in what I am doing, I am more than happy to learn it, you know. But वो चीज ना बहुत लोगों में film industry में, because a lot of people have a lot of egos in the film business, you know it, I know it, everyone knows. So मुझे नहीं पता, ये ना लोगों को पसंद नहीं होता. लोगों को ये दिखाना होता है कि मुझे सबके बारे में सब कुछ, सबका काम पता है. मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड, और वो नो नहीं बोलना चाहता है कभी भी. तो कई बार ऐसे मौके में से आई एम ड्राइविंग, इज सिटिंग विथ मी, और रास्ता लेफ्ट जाता है या राइट, आई विल आस्क हिम कि यहाँ से लेफ्ट जाए या राइट. ही डजंट नो, ही विल स्टिल से कहीं से भी जा सकते हो. Now see, that's the problem. Like, how can you be that? Like, I don't know, this happens a lot of times. It's like either take this side or that side. दिन है या रात, वो बोलेगा तुम्हारे सोचने पे. So you and I both know, we have all gone through it so well. Yeah. Have you ever faced this? Like, say if someone is a writer, he can be seen as a banker as well. If someone is a director, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है. लेकिन कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, वो यार दिखता ही डिफरेंट है, उसकी स्टाइलिंग ही डिफरेंट है. वो खुद का चलता फिरता विजिटिंग कार्ड भी है कि दे ही इज सो ब्लिंगी, स्टाइलिश, थोड़ा सा करेजियस ड्रेसिंग. क्या है मतलब, तो जरूरी नहीं है. वैसे बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है बिजनेस में जो बहुत ही खराब कपड़े पहन के आते हैं ऑफिस में. But I'm just saying, more or less, मतलब generally speaking, I would say 60%. That's quite a high. That's a lot. That's quite a lot. Yeah, because मुझे लगता है कि I'll give you an example. So सोचिए कि आप राइटर हैं, आपकी जो लिखावट होगी ना, वो नॉन राइटर के लिखावट से अलग होगी, है ना, क्योंकि that's what you're good at. Verbal communication also. Yeah, it's different. So क्या होता है कि आप
कैसा लिख रहे हैं वो लोगों को दिखता नहीं है, बट हम जो करते हैं ना वो हमारे ऊपर दिखाई होता देता है, तो वो दिखता है इसके लिए, दिखता यू नो, दैट्स व्हाई यू फील दैट वी लुक डिफरेंट बिकॉज वी डील इन लुक्स, whereas every specific technician who deals with a certain aspect Correct. of anything, they always have a point of view which will be different from the other people, Yeah. but because हमारा कपड़े का होता है ना, तो वो दिख जाता है सामने से बिल्कुल। कि